Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. This is the lecture number 2 of active and passive voice. Today we are going to learn the passive voice in present tense, and we will discuss three aspects of the present tense: present indefinite, present perfect, and present continuous tense. And we will discuss different problems, and we will go through the rules that are necessary to change the active voice into the passive voice. So present indefinite tense, we have examples of active voice and then the passive voice. The first one is, I read storybook before going to bed. So the subject is I, read is verb, and storybook is the object. So we have to focus on these three things. तो इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हैं, इन सब्जेक्ट, वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। सो वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। स्टोरी बुक इज़ रेड बाय मी बिफोर गोइंग टू बेड। सो हम इसमें देख सकते हैं स्टोरी बुक जो कि ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने उसको सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस किया। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया बिकॉज दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करें बिकॉज रीड हैज़ द सेम स्पेलिंग इन द थर्ड फॉर्म एंड वी प्रोनाउंस इट एज रेड। देन वी एड बाय, और उसके बाद हमने मी लिखा है जो कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द आई है। आई सब्जेक्ट था, जब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला गया तो हम इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में। सो इट हैज़ चेंज फ्रॉम आई इनटू मी। सो द स्टोरी बुक इज़ रेड बाय मी बिफोर गोइंग टू बेड। सो दिस इज़ द फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। He hunts a deer, we change it into the passive voice. A deer is hunt by him. A deer is hunt by him. He hunts a deer. So a deer was object, इसको हमने subject की जगह रिप्लेस किया। और hunts फर्स्ट फॉर्म है, is hunted हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की is के साथ, और he सब्जेक्ट था, इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह ले कर गए हैं तो उसको him में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, we serve the people dedicatedly. We serve the people dedicatedly. We subject है, verb is the serve, the people is object. तो ऑब्जेक्ट को हमने रिप्लेस कर दिया है, people सब्जेक्ट की जगह ले आए, और served by us डेडिकेटेडली। डेडिकेटेडली एडवर्ब है, उसको आपने चेंज नहीं करना, ऐसे ही रहना है। और जो सब्जेक्ट था वी, उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह अस बना दिया है। सो द पैसिव वॉइस इज, पीपल आर सर्व्ड बाय अस डेडिकेटेडली। वी गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द बॉयज़ डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका पैसिव भी नेगेटिव होगा। इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फॉलोड बाय द बॉयज़। इंस्ट्रक्शंस चूँकि प्लूरल है इसलिए हमने इसकी जगह आर यहाँ पे प्लेस किया है, एंड फॉलोड इज़ द थर्ड फॉर्म, बाय हमने ऐड किया है, और सब्जेक्ट द बॉयज़ था, सो दिस इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हमने इसको ऐसे ही रखा है। Some more examples of present indefinite tense. You visit library every evening. Library is visited by you every evening. So library यहाँ ऑब्जेक्ट में था, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। you सब्जेक्ट में था तो ये ऑब्जेक्ट में you ही रहा। तो इट मीन्स कि हम you को जब ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करेंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी you ही रहेगी। लाइब्रेरी सिंगुलर था इसलिए हमने यहाँ पे इज़ प्लेस किया, और विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड है, और हमने इसको पैसिव वॉइस में यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल इज, शी स्टिचेस ड्रेसेस। शी स्टिचेस ड्रेसेस नीटली। शी इज़ द सब्जेक्ट, स्टिचेस इज़ द वर्ब, एंड ड्रेस इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ड्रेसेस विल बी इन द बिगिनिंग। ड्रेसेस तो प्लूरल है, हमने यूज़ किया आर। स्टिच्ड इज़ द थर्ड फॉर्म, बाय हमने ऐड किया, और बाय हर, और नीटली एडवर्ब है, और ये लास्ट पे ही रहेगा। नेक्स्ट इज, द पुलिस प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम रॉबर्स। द पीपल आर प्रोटेक्टेड बाय द पुलिस फ्रॉम रॉबर्स। द पुलिस प्रोटेक्टेड द पीपल, द पुलिस इज सब्जेक्ट, प्रोटेक्टेड वर्ब, एंड पीपल इज ऑब्जेक्ट। तो
ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट में लिया है. द पीपल आर प्रोटेक्टेड बाय द पुलिस फ्रॉम रॉबर्स. नेक्स्ट इज do you not speak English? So this is a negative interrogative. So the passive will also be negative interrogative. Do you not speak English? So the last example is do they not speak English? This is negative interrogative. We change it into the passive. Is English not spoken by them? It is a little bit tricky. तो अगर आपके लिए मुश्किल हो तो आप इसको थोड़ा पॉजिटिव में पहले चेंज करें. लाइक हम इसको बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि दे स्पीक इंग्लिश. दे स्पीक इंग्लिश का पैसिव बनेगा इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय देम. तो जब उसको इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा तो इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, इज़ इंग्लिश स्पोकन बाय देम. और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो स्पोकन के बाद से पहले हम नॉट लगा देंगे, इज़ इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय देम. तो एक तो ये तरीका है. और सेकेंडली यू कैन ईजीली फाइंड आउट, हमें पता है इज़ एम आर यूज़ करेंगे हम पैसिव में, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है. ये जब सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ वाई द सेंटेंस विल बी इज़ इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय देम, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे. So there are a few rules to change from active to passive in present indefinite tense. Number one is subject and object are interchanged. Subject को object की जगह replace करते हैं और object को subject की जगह ले आते हैं. Use third form of the verb in all the passive. We use every time the third form of the verb. Use helping verbs is am are before the verb. वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव में इज एम आर यूज़ करेंगे. एड बाय बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. जिसको वो सब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट की जगह पे आप ले गए हैं, बेसिकली वो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया है, उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म से पहले आप बाय यूज़ करेंगे. चेंज सब्जेक्ट्स सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव फॉर्म. क्योंकि आप सब्जेक्ट को आप ले जा चुके हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो आप सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे. So now we go through some pronoun changes, that how to change pronoun from subject to object or subjective form to objective form. First of all we see I into me. अगर सब्जेक्ट में I था एक्टिव वॉइस में, जब पैसिव में चेंज जाएंगे आप तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाके मी बन जाएगा, उसको हम मी लिखेंगे. We is changed into us, you remains the same, you, he is changed into him, she is changed into her, and they is changed into them. So these are some pronoun changes that we must understand before changing the passive into active into passive voice. Okay, next sentence is present continuous tense. We go through some examples. Like I am writing a story to publish in the newspaper. I is the subject, am is the helping verb, writing is the ing form. A story is the object. So we will take a story in the beginning. A story. So this is present tense. We are using helping verb is. And another word that we are adding to this passive voice is being, due to the continuous tenses. In all continuous tenses we add being in the passive voice. Written is the third form of the verb. Then we add by, then object which was subject here I को हमने me में change किया. To publish in the newspaper, जो phrasal part of the sentence that will remain the same. So the sentence is a story is being written by me to publish in the newspaper. Go to the next example. He is calling his friend to help him. He is calling his friend. He subject is the helping verb, calling is the main verb, and his friend is the object. So his friend हम start में ले आएंगे, उसके साथ हमने helping verb is use किया है, being हमने add किया है, called is the third form, then we add by, और फिर हमने he को him में change कर दिया. To help him is the phrase that remains the same. Next is we are serving the people dedicatedly. We are serving the people dedicatedly. The people are being served dedicatedly by us. People are being served dedicatedly by us.
Next example, is Ali eating pizza at the restaurant? Is Ali eating pizza at the restaurant? So this is a question, तो हम इसका पैसिव भी क्वेश्चन में ही बनाएंगे. Is pizza eaten at the restaurant by Ali? Is pizza eaten at the restaurant by Ali? We go through the more examples. First one is, you are teaching English in a better way. You are teaching English in a better way. तो इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, तो हम इंग्लिश को सबसे पहले प्लेस करेंगे. इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू. सो सब्जेक्ट यू था, ऑब्जेक्ट में भी ये यू ही रहेगा. इन अ बेटर वे. नेक्स्ट इज, शी इज स्टिचिंग ड्रेसेस नीटली. ड्रेसेस आर बीइंग स्टिच्ड बाय हर नीटली. हमने बीइंग और थर्ड फॉर्म यूज़ किया है. द पुलिस आर प्रोटेक्टिंग पीपल फ्राम रॉबर्स. अगर पुलिस को आप प्लूरल कंसीडर करेंगे तो आर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब. अगर आप पुलिस कोई सिंगल वन पुलिस मैन है और आप उसको लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप उसके साथ इज़ लिखेंगे. सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. द पुलिस इज़ प्रोटेक्टिंग पीपल, इट मीन देयर इज़ वन पुलिस मैन. Police are protecting the people, it means there are many or several policemen there. So police are protecting people from robbers. The people are being protected by the police from robbers. The shopkeeper is not selling goods at the low price. The shopkeeper is not selling goods. So this is negative sentence. The goods are not being sold at low price by the shopkeeper. The goods are not being sold at low price by the shopkeeper. So we go through the rules that are necessary to change active into passive voice. Subject and object are interchanged as we have discussed in earlier stage. Use third form of the verb, add the verb being before third form of the verb. तो continuous tenses में ये एक वर्ड है जो आपने खुद से ऐड करना है, being, और इसको verb से पहले ऐड करेंगे. यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाएगा. एड बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस एंड चेंज सब्जेक्ट फॉर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन टू द ऑब्जेक्टिव फॉर्म. और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करना है वो हम प्रीवियस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Next and the last tense is the present perfect tense. We go through the examples of present perfect tense. I have written a story for a newspaper. I is the subject, have written verb, a story is the object. So a story will be at the beginning. Story singular है, we are using has been. तो यहाँ पे आपने have written the means present perfect में have और third form यूज़ कर रहे हैं. तो जब passive में जाएंगे तो has been और have been यूज़ करेंगे third form से पहले. A story has been written by me for newspaper. He has helped his friend. He has helped his friend. His friend has been helped by him. His friend has been helped by him. We have served the people. We have served the people. The people have been served by us. The people have been served by us. We subject था, उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया अस. हैव सर्व्ड, तो यहाँ पे क्या है, हैव बीन सर्व्ड. तो हैव सर्व को हमने हैव बीन सर्व में चेंज किया. द पीपल ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया. नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन देयर एग्जाम्स. एग्जाम्स हैव नॉट बीन टेकन बाय द स्टूडेंट्स. सो एग्जाम्स और स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर दिया और हैव के साथ आपने बीन यूज़ किया. हैव नॉट बीन टेकन बाय द स्टूडेंट्स. Some more examples. You have completed the task on time. You have completed the task. You subject, have completed verb, and the task is object. So the task will be at the beginning in passive voice. The task has been completed by on time by you. The task has been completed on time by you. Next, the police have arrested the robbers. The police have arrested the robbers. The robbers have been arrested by the police. The robbers have been arrested by the police. Has the flood destroyed everything? So this is interrogative sentence. Has the flood destroyed everything? So जब हम इसको पैसिव चेंज करेंगे तो has everything
destroyed by the flood? Has everything destroyed by the flood? Again, तो हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब था उसको स्टार्ट में ले आए, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा. A few rules to change the active into passive. Subject and objects are interchanged. Use third form of the verb in the passive voice. Use has or have as helping verb. And we know that हम have कहाँ use करते हैं, हम have को I और we के साथ यूज़ करते हैं, या हम plurals के साथ यूज़ करते हैं, और has हम singular या he she it के साथ यूज़ करते हैं. Add by before the object in passive voice. Passive voice में जो subject object बना दिया था आपने, उससे पहले आप by का word use करें. Change subjective form of the pronoun to the objective form. So this was the lesson number 2 of the active and passive voice. We have learned that how to change active voice of the present tenses into the passive voice. Next lesson will be about the past tense, and we will learn that how to change active voice of the past tenses into the passive voice. Thank you so much. This is the end of the lesson. Subscribe the channel for upcoming videos and like it and share with the colleagues. Thank you so much. Allah Hafiz.